हेलो वेलकम टू अनदर वीडियो इन इंग्लिश एक्सपी। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करवा सकते हैं। वी आर गोइंग टू लुक एट सम कॉमन क्वेश्चंस, अक्सर जो क्वेश्चंस इंट्रोडक्शन में पूछे जा सकते हैं, एंड देन अगेन सम आंसर्स ऑन हाउ यू कुड आंसर सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। दिस इज़ गोइंग टू बी पार्ट ऑफ कंटिन्यूइंग वीडियो सीरीज जिसमें मैं आपको इंट्रोडक्शंस और उनके आंसर्स बताता रहूँगा। सो मेक श्योर you subscribe now and turn on the notifications so you can regularly get updated on English learning videos. So one of the first questions that we're going to look at is what's your name? First of all, let's look at the question. What's your name? We see here that what's is a contraction. Contraction क्या होती है? What apostrophe s. ये असल में क्या कह रहे हैं? What is your name? But generally, native English speakers will often use contractions such as what's to shorten their sentences and to improve their fluency. So ये आपने भी कोशिश करना है कि what's जैसी contractions अपनी regular usage में लेके आए. Now you can of course answer that by saying my name is and then your name. For example, my name is Ahmed or my name is Ahmed Tariq. Another way that you can answer this is I'm Ahmed. Now I'm again is a contraction जैसे कि हमने what's देखा था, तो I'm stands for I am. You write I apostrophe M and the A is basically taken up by the apostrophe and you call it I am. So I am Ahmed. Another way you can tell somebody what your name is please call me and then your name. Now please call me का क्या मतलब है कि आप मुझे please ये कहें. So please call me Ahmed or they call me Ahmed. Again this what does they call me mean कि लोग मुझे Ahmed कहते हैं. Another common question जो आपसे इंट्रोडक्शन में कोई पूछ सकता है या आप किसी से भी पूछ सकते हैं is where are you from or where do you come from. इसका क्या मतलब है कि आप कहाँ से आते हैं या आप कहाँ के हैं. You can say as in reply to that I'm from and then the name of the place. So for example, I'm from Pakistan or I'm from India, I'm from Karachi. तो city भी use कर सकते हैं, country भी use कर सकते हैं. Another way of saying I'm from a place is I hail from. इसका क्या मतलब है? वही मतलब है कि मैं यहाँ से हूँ. And again you can also say I'm originally from. What does that mean? That मैं असल में या मैं ओरिजिनली मैं असल में कहाँ से हूँ. आप कहते हो ना कि मैं आई एम लिविंग इन कराची बट आई एम ओरिजिनली फ्रॉम पंजाब. इसका क्या मतलब है कि मैं अभी कराची में रह रहा हूँ लेकिन मैं असल में पंजाब का हूँ. So again try to use these phrases in your everyday life so that you get comfortable with them. Now let's look at another common question जो introductions में use होता है. Where do you live? What does this mean कि आप कहाँ पे रहते हैं. You can always reply to this by saying I live in and in के बाद आप अपने शहर की बात कर सकते हैं. या अगर आप अपना specific address बताना चाह रहे हैं तो you can say my address is and then आप exactly अपना पूरा address बता सकते हैं. Another answer to this could be I spent most of my life in. इसका क्या मतलब है कि मैंने ज़्यादा ही अपनी ज़िंदगी यहाँ पे गुजारी है. तो for example I could say I spent most of my life in Islamabad. इसका क्या मतलब है कि मैंने अपनी ज़्यादा ज़िंदगी इस्लामाबाद गुजारी है. So again कोई भी जो शहर हो या जगह हो या कंट्री हो, I spent most of my life in Pakistan. So that basically means कि मैंने पाकिस्तान में अपना ज़्यादा टाइम गुजारा है. So in this video we saw some common questions that you can encounter जो आपके सामने आ सकते हैं introduction में and some easy structures to answer them. Make sure you practice these structures and again आप subscribe कर लें, subscribe to this channel so that you can regularly get updated on English related videos. Thank you for tuning in to English XP.